और आपने तो महाभारत में भी पढ़ा होगा भीष्म की जो वो थी मत्स्य कन्या थी, वो 20 साल बाद इनकी उम्र हो गई 65 साल। ठीक है, 5 साल हो गए इनको रिटायर हुए, क्या रिलीफ देंगे इनको? पेंशन तो मिल जाए, कैसे मिल जाएगी बताइए ना? बिगर अपॉइंटमेंट के प्रमोशन हो जाता है, दैट इज नॉट द इशू। फेक सर्टिफिकेट होता तो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता। आंसर इज यस, देन यू सक्सीड। इफ आंसर इज नो, यू फेल। आप बहुत मेहनती हो, ये बात अच्छी है, इट्स गुड, बट हमारी लीगल बात को तो जवाब दे दीजिए। This appointment was only for reserved category. ये कहाँ से For मालूम the पड़ेगा? ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? Yes, my lord, that certificate was issued to the petitioner of the caste of Madhya. Now, my lord, what had happened, my lord, that prior to the marriage of the petitioner, she was Gupta. After her marriage with one Rekwar, my lord, she became Rekwar. And Maji, she got the certificate of Maji caste. बस On that basis, पॉइंट समझ गए ना? शादी के बाद कास्ट। हाँ तो इसमें सर मेरा ये कहना था कि आई हैड नॉट सप्रेस्ड एनीथिंग। नहीं, यू मे नॉट हैव। सिर्फ लीगल इशू इतना सही है कि एक नॉन माझी मैरिंग इनटू द क्लैन ऑफ बाय बर्थ ही होता है ना, ठीक है ना? और आपने तो महाभारत में भी पढ़ा होगा भीष्म की जो वो थी, ठीक है ना, मत्स्य कन्या थी वो। बट इवन ऑन पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? इवन ऑन टुडे माय लॉर्ड, कल बचा क्या? certificate has not been cancelled. We are not concerned. Padri Patil says, my lord, that an high power committee has to be constituted for the purposes of looking into the legality and validity of the caste certificate. स्टे है क्या इसमें? No, there is no stay. फिर And my lord, आज 20 साल बाद इनकी उम्र हो गई 65 साल। ठीक है, 5 साल हो गए इनको रिटायर हुए, क्या रिलीफ देंगे इनको? पेंशन तो मिल जाए, कैसे मिल जाएगी बताइए ना? आप हमें सिर्फ इतना सा सेटिस्फाई कर दीजिए, हमारा तो पॉइंटेड क्वेरी है, आपसे ज्यादा हम बहस भी नहीं करवाना चाहते। हमने तो कह ही दिया कि वो बस खत्म हो गई बात। लेकिन ये अगर ये उत्तर प्रदेश की मांझी होती और यहाँ मांझी समुदाय में शादी होती है, छत्तीसगढ़ की मांझी होती, तो वो आपका सर्कुलर लग जाता कि भाई ऑन मैरिज इफ पर्सन माइग्रेट्स एंड दैट कास्ट इज classified under the same category, be it OBC, SC, ST, whatever, in the state where she migrates, then he was confirmed. Everything is fine. All these actions were void ab initio. The moment you secured appointment on the basis of a certificate which you were not entitled to hold, all the actions were void ab initio. That certificate is to be looked into by the high power committee. There was no constitution of high power committee उस सर्टिफिकेट को देखती है जहां पर डिस्प्यूट हो, जैसे हलवा हलवी का एक केस, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए कोष्टा कोष्टी कि भाई ये कास्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है। अगर आज मैं एक सर्टिफिकेट ले लूं apparently it is void ab initio. I cannot derive any benefit out on the strength of that caste certificate. This for the inquiry was circular dated 19/12/96, page 29. Page 29. चलिए. The basis complaint was made after this circular. Now this circular is in relation to grant of promotion, not in relation to grant of appointment. अच्छा. बिगर अपॉइंटमेंट की प्रमोशन हो जाता है? सर अगर सर ये देखिए तो हाँ पढ़िए ना, 19/12/96 का पेज 29 पे पढ़िए प्लीज। अतः स्पष्ट है कि कहाँ पढ़ रहे हैं आपका? ये पैराग्राफ 2 में 3-4 लाइन नीचे से पेज 29 में उपरोक्त अनुसार दर्शाए गए सभी तथ्य हाँ फ्रॉम द बॉटम 5-6 लाइन्स अबव उपरोक्त तथ्य के अतिरिक्त इस बात की शिकायत लगातार प्राप्त होती रही है कि मंडल में कार्यरत कर्मचारी द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु पदोन्नतियों में प्रदत्त सुविधाओं का
लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ शिकायतों की जांच किए जाने पर उपरोक्त आरोप सत्य पाए गए हैं। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। Now, my lord, may come to the inquiry which was held. I was issued a charge sheet, my lord, and in the inquiry, my lord, if my lord may come to page 39. 39, yes. Last two paragraphs. जी इन जाति प्रमाण पत्रों में से जाति प्रमाण पत्र दिनांक 21/7/89 के विषय में श्रीमती ममता रैकवार ने स्वयं स्वीकार किया है कि ये प्रमाण पत्र उनके द्वारा विवाह के आधार पर प्राप्त किया गया है। विवाह के उपरांत जाति परिवर्तन न होने के भारत शासन के नियम के विषय में उनकी जानकारी न होना स्वाभाविक लगता है, क्योंकि नौकरी में आने के पूर्व उन पर उनका मंडल अथवा भारत शासन के नियमों से परिचित होना कठिन है। विवाह के पूर्व श्रीमती ममता रैकवार के गुप्ता होने एवं विवाह के उपरांत जाति परिवर्तित न होने का भारत सरकार ये नियम श्रीमती ममता रैकवार की नियुक्ति के समय मंडल की जानकारी में था। माय लॉर्ड, काइंडली सी माय लॉर्ड, क्या लिखा है इन्होंने? विवाह के पूर्व श्रीमती ममता रैकवार के गुप्ता होने एवं विवाह के उपरांत न होने का भारत सरकार नियम श्रीमती ममता रैकवार की नियुक्ति के समय मंडल की, ये कहाँ से आई है फाइंडिंग? ये सर इंक्वायरी हुई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अच्छा अच्छा, इंक्वायरी तो फिर उन्होंने क्या कह दिया इंक्वायरी ऑफिसर ने? My lord, may kindly see, I filed an affidavit. Annexure P1 is my caste certificate, and Annexure P2 is the affidavit which I had filed before for the purposes of getting employment. So it was in their knowledge. हाँ वो बताइए। ये P1 जाति प्रमाण पत्र है। हाँ, ये P1 अनुसूचित जनजाति में आती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एफिडेविट दूसरे पेज पे है, पेज 10। आय श्रीमती ममता रैकवार, तो सरनेम का चेंज है। हाँ, तो ये कास्ट चेंज का कहाँ लिखा है भाई? अरे भाई एक सेकंड, how anybody is supposed to know कि गुप्ता किस उसमें आते हैं? गुप्ता तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, that is known to everyone। नहीं, now that is too generalized a statement, ठीक है। अभी स्टेटस ये है कि आपने इसमें सरनेम चेंज किया है, जाति बदलने के बारे में कहाँ लिखा है एफिडेविट में? तो वही तो एलिगेशन है हमारे ऊपर। हाँ 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 हाँ। My lord, में काइंडली सी आरोप पत्र पेज 14, the allegation on me। जी जी। आवेदिका श्रीमती ममता रैकवार ने अपने आवेदन पत्र में स्वयं को अनुसूचित जाति का बताया है, जो कि भारत सरकार गृह मंत्रालय पत्र संख्या 16 मध्य प्रदेश शासन के विवाह पर आधारित जनजाति की पात्रता के नियम के विरुद्ध है। और उसके समर्थन में उन्होंने जिलाध्यक्ष कार्यालय जबलपुर से वर्ष 1989 में अवैध एवं नियम विरुद्ध जाति जनजाति के प्रमाण पत्र को प्राप्त कर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में प्रस्तुत किया। I have not produced any fake certificate. That is not the issue. Fake certificate होता तो आपके खिलाफ criminal prosecution होता। हाँ। Issue ये नहीं है। Issue यह है कि whether one is entitled to seek migration from A caste to B caste on the events of performance of marriage. That is the only issue. If answer is yes, then you succeed. If answer is no, you fail. Yes. My answer to this query would be, my lord, that it was known to the respondent that I belong to Gupta। आप बहुत मेहनती हो, ये बात अच्छी है, it's good, but हमारी लीगल बात को तो जवाब दे दीजिए। My lord, मैं kindly see, my lord, the दस्तावेज की सूची page 16। Page 16, yes.
दस्तावेज की सूची हाँ, प्लॉट 3 क्लॉज 3 श्रीमती ममता रैकवार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र जिसमें उन्होंने श्री M.A. नबी नोटरी जबलपुर द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र दिनांक 23/11/88 एवं पति श्री अशोक कुमार रैकवार का मांझी जनजाति के प्रमाण पत्र संलग्न किया है कि सत्यापित प्रति छाया प्रति है. So my lord, it was there in the knowledge that I belong to Manji. I belong to Gupta, but after my marriage, I submitted a certificate which was of the Manji community. जी जी. So my lord, it was not a case of suppression of any material fact for the purposes of getting There was employment. absolutely no material fact. I am again saying, if there would have been material fact, you would have been Then the Wait. entire, my lord, then the entire proceeding, entire inquiry against me is liable to be questioned. अच्छा ठीक है चलिए. Anything else? And my lord, I would lay stress on Madhya Pradesh judgment. हाँ दे दीजिए. माधुरी पाटिल भी दे दीजिए. This is 94 volume 6 SCC 94 volume 6 SCC page 241 para 30. पैरा 30. लाइएगा भाई दीजिए. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बहस करते तो पहले लिस्ट दे दें, बहुत समय बच जाएगा. किताबें निकलवा के रख लेंगे. सर पहले मेरे पास AIR का था. अरे भाई आप AIR दे दीजिए. मैं आपसे सबसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप बहस करते हैं किसी मैटर में, इफ यू आर रिलाइंग ऑन सम जजमेंट्स, तो आपके पास 2 कोर्स ओपन है. या तो आप फोटो कॉपी करा के यहीं की यहीं दे दीजिए, या आप किताबों की लिस्ट दे दीजिए, तो किताबें कम से कम निकल के रखी रहें. पढ़िएगा पैरा 13 पढ़िएगा प्लीज. Procedure is being given as to how the inquiry is to be conducted by the high power committee. Okay. The admission wrongly gained or appointment wrongly obtained on the basis of false social status certificate necessarily has the effect depriving the genuine scheduled caste or scheduled tribe of OBC candidates as enjoined in the Constitution of the benefits conferred on them by the Constitution. The genuine candidates are also denied admission to educational institution or appointments to office or post under a state for a want of social status certificate. The ineligible or spurious persons falsely gained entry sought to dilatory taxes and create hurdles in completion of the inquiries by the scrutiny committee. It is true that the applications for admission to educational institutions are generally made by a parent, since on that date, many a time the student may be a minor. It is the parent or the guardian who may play fraud claiming false status certificate. It is therefore necessary that the certificates issued are scrutinized at the earliest and with utmost expedition and promptitude. From that purpose, it is necessary to streamline the procedure for issuance of social status certificates, their scrutiny and their approval, which may be following. Now, the entire process has been given as to how the high power committee is to work जी for the purposes of verifying the caste certificate. जी जी. And 3 times the charge sheet was issued to me. One in the year 98, then 2 times. 2002, for the same allegation. My lord, I would based on judgment, my lord, दीजिए. penultimate paragraph would be relevant. जी. उन्होंने कहा कि रूल 10 में पेनल्टी दी है, इसलिए रूल 14 के प्रावधान फॉलो नहीं हुए, इसलिए ऑर्डर वाज क्वेश्चन. हाँ. चलिए अब आपका बताइएगा, आपकी चार्जशीट कहाँ है? चार्जशीट तो ये 2 बार दिए वो. हाँ नहीं, एक बार इन्होंने दी पेज 14 में, पहले आइए आपके रिलीज क्लॉज. 27/11/99 को 7/1/2003 का ऑर्डर और क्वेश करने के लिए कहा. जी अमेंडमेंट फाइल किया. टर्मिनेशन ऑर्डर बाद में इशू हुआ आफ्टर फाइलिंग. डिसमिसल ऑर्डर लिखा तो है, क्वेश द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल 13/2/2003 पे 13. हाँ. चलिए और एक चार्जशीट हमको दी इन्होंने
एक 27/11/99 को दी है और दूसरी चार्जशीट सेम चार्जेस पे। जी ठीक है, और बताइए। My lord, my case is covered, my lord, that I had not suppressed anything. ठीक है That fact was very much known to the respondent prior to my appointment. My appointment was confirmed. Initially, I was appointed on probation. Thereafter, I was confirmed in the 1993 on the basis of anonymous report and on the basis of the circular issued by the government in the year 1996, जी which said, which was in relation to grant of promotions only. ठीक है, So that no, that you have already said. Yes. और बस anything else? Yes, Mr. My Jaiswal. lord. Well, first of all, my lord, this employment was only for the purpose of scheduled caste, reserved category. She was not a reserved category. My lord, annexure R1 is the circular which we have filed 6/11/92. Your lordship may kindly see. जी क्या लिखा है उसमें? This is only for the reserved category. अरे ये इनका उसके लिए appointment- इनका ओरिजिनल अरे एक सेकंड साहब, इनका अपॉइंटमेंट है 1989 का, अगर मैंने गलत नहीं पढ़ा 92 का सर्कुलर कैसे लागू होगा? 89 का अपॉइंटमेंट है ना आपका हाँ, इनिशियल? जी। हाँ, तो ये 92 का सर्कुलर कैसे लागू होगा? 92 का जो सर्कुलर है, दिस इज पढ़िएगा जरा, ये रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है क्या? नहीं, ये सही है मैरिज से ये उसका सर्कुलर है कि अगर मैरिज के बाद अगर आपने अपनी कास्ट चेंज कर लिया है, सो वेदर इट विल बी एप्लीकेबल और नॉट। हाँ तो ये बताइए ना। हाँ तो इन्होंने मैरिज के बाद अपनी कास्ट चेंज कर, इवन दैट टू जो उनको कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया था, दैट वाज कैंसिल्ड बाय द अथॉरिटी। जी 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 दैट इज व्हिच इज एविडेंट फ्रॉम एनेक्चर R2। जी हाँ ठीक है, वो तो समझ गए। दैट वाज कैंसिल्ड। हाँ, सो लेकिन ये मीनिंग कहना कि ये सिर्फ शी बैकलॉग के लिए रिक्रूटमेंट था, ये गलत है। Yes, Actually. she continues to be on the general category, ठीक। and this appointment was only for reserved category. ये कहाँ से For मालूम the पड़ेगा? ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? ये साहब इनका जो सर्कुलर है, देखिएगा, this writ petition is filed seeking quashing of order dated 7/1/2003. कहाँ है पेज नंबर? Annexure P30. 30 तो भाई Page number 13/2/2003 का है। 7/1/2003 कौन सा है? My lord, I did not have the file of the. बहुत मैंने बढ़िया। उससे 13/2/2003 is the order of मैंने termination. डाउनलोड Annexure P30. आया नहीं। अच्छा चलिए, 13/2/2003. has filed this writ petition seeking quashing of order dated 13/2/2003, annexure P13, whereby services of the petitioner were terminated by inflicting a major penalty of dismissal from service with effect from 13/2/2003. Full stop. Next paragraph. Brief petitioner is not assailing any other order. Next paragraph. ऊपर लिख लेना dictated in open court in presence of learned counsel for the parties. Next. Brief facts which are necessary for decision in this case are that petitioner's original name is Mamta Gupta. Admittedly, she is a member of general category. Full stop. She had performed marriage with Mamta Gupta, daughter of Shri Deepchand Gupta. She had performed marriage with one Shri Ashok Kumar Raikwar, resident of Choti Umti, Jabalpur. Full stop. Pursuant to her marriage, कब हुई है इनकी शादी? ये हुई है 60 On 22/5/1986, she obtained a caste certificate to show that she belongs to scheduled tribe category. Thereafter, petitioner had applied for appointment and in the then Madhya Pradesh Electricity Board on the post of office assistant grade 3 within bracket trainee. Full stop. Next one. Petitioner was granted appointment by order dated 20/12/89.
Full stop. In her original appointment order, it is mentioned in clause 3 that she should produce her original certificates oblique documents in regard to educational qualification, comma, age, comma, caste, comma, surety bond and agreement bond, etc. at the time of joining. Next one. Petitioner's case is that some complaint was made. She was confirmed order dated 15/3/1993 as contained in Annexure P4. Thereafter, some complaint was made that petitioner in fact was born under general category and has obtained a caste certificate showing her to be a member of scheduled tribe on the strength of her marriage to Shri Ashok Kumar Rekwar, and this certificate could not have been issued in favor of the petitioner because circumstance of marriage will not permit the petitioner to migrate from general category to scheduled tribe category. Next paragraph. Petitioner was issued a show cause notice as show cause notice dated 27/11/99 as contained in Annexure P5 by the additional chief engineer within bracket Hydel Power MPV Jabalpur. Full stop. This was containing as enclosures copy of the charge sheet, comma, details of the charges and the list of the documents on the basis of which charges were sought to be proved. Next paragraph. Petitioner had admittedly filed a detailed reply to the charge sheet on 10/12/1999, mentioning therein that principles of promissory estoppel, ये वादात्मक विबंधन यही होता है ना, promissory estoppel ये है ना, ये है पक्का, promissory estoppel. Full stop. She made a mention that since in 1975 she was a student of BSc Part 2, she had no knowledge of Union Government's order dated 2nd May 1975, which provides that a person born in general category will not migrate to reserve category on the strength of marriage. Full stop. After filing of the inquiry reply, comma, Chief Engineer Hydel appointed one Shri Y.K. Rastogi, Superintending Engineer TH Design, as inquiry officer to conduct a departmental inquiry against the petitioner. One Shri Muhammad Suleiman, the then additional CE, was appointed. क्या लिखा? नहीं एक सेकंड, ये क्या, पहले तो इन्होंने इनको अपॉइंट किया वाईके रस्तोगी को, फिर क्या हो गया? नहीं पढ़िएगा P7 जरा, इसको अपॉइंट कर रहे हैं ये एक्चुअली दो बार एक्चुअली साहब एक बार पहले नोटिस दिया, फिर इनको बोला गया टू सबमिट द ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, इन्होंने टाइम लिया नहीं दिया, उसके बाद फिर गवर्नमेंट से भी करस्पॉन्डेंस हुआ, वहां से आया, इसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कोई इनका कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं, एंड प्रॉब्ली इट वाज कैंसिल्ड बाय द तहसीलदार, और उन्होंने ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट को अपने पास रख दिया था और कैंसिल कर दिया था और इनको दिया नहीं था, दे फेल्ड टू सबमिट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर दूसरी इंक्वायरी। अच्छा लिखिएगा,
ऐसा तो लास्ट में जो लिख रहे थे ना, ये 5/6/2002 वाला, ये ऊपर लिखिएगा, इसको काट दीजिएगा. It is informed that in pursuance to the charge sheet issued in the year 1999, a departmental inquiry was conducted by Shri Y.K. Rastogi, who had furnished his report, inquiry report. नहीं सर, मोहम्मद सुलेमान पैरा 2 में ये एक मिनट रुक तो जाइए, है भाई आपका ये, इसमें रस्तोगी जी की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की रिपोर्ट लगी हुई है, जो आप पढ़ रहे थे उस वक्त. हाँ वो मैं पढ़ रहा था जी, वो रस्तोगी जी की है. ऐसा मत करिए. क्या लिखा? Rastogi, Y.K. Rastogi had submitted his inquiry report dated ये 7/1/2003 की है. इसके बाद तो आपका टर्मिनेशन हो गया. ऐसा मत करिए, सब काट दीजिए सर, पूरा नहीं, मतलब सिर्फ इतना लिखिए. Thereafter, one first inquiry was conducted and petitioner was directed to produce original copy of her caste certificate, etc. Full stop. In the meanwhile, long communication took place between the state authorities and the MPB. Full stop. Thereafter, another inquiry was instituted in which inquiry officer had submitted his report dated 7/1/2003 contained in annexure P12. Full stop. In this inquiry report, it is mentioned that petitioner herself admitted that she had obtained said caste certificate on the basis of her marriage. Full stop. It is further held that her contention that she had no knowledge about the rules of the government of India appears to be natural because it was difficult for her to be acquainted with the said rules prior to joining the service. Full stop. He also recorded a finding that this fact that the petitioner was Gupta prior to marriage was within the knowledge of the board, and accordingly also recorded a finding that caste certificate dated 23, डेट क्या है, 8 है 3 है, 23/3/96 23/3/96 and 28/1/97 were not found to be correct as per the confidential letter sent by the district collector Jabalpur, White, letter dated 4/2/2002. Full stop. Next para. On the basis of such inquiry report, penalty of dismissal was inflicted on the petitioner. Next para. It is submitted that petitioner's case is squarely covered by the law laid down by Supreme Court in Kumari Madhuri Patil and another versus Additional Commissioner Tribal Development and others, 1994, 6 SCC 241, wherein it is held in para 13 that the admission wrongly gained or appointment wrongly obtained on the basis of false social status certificate necessarily has the effect of depriving the genuine scheduled castes or scheduled tribes or OBC candidates as enjoined in the Constitution
of the benefits conferred on them by the Constitution. Full stop. The genuine candidates are also denied admission to educational institutions or appointments to office or posts under a state for want of social status certificate. Full stop. The ineligible or spurious persons who falsely gained entry resort to dilatory tactics and create hurdles in completion of the inquiries by the scrutiny committee. Full stop. It is true that the applications for admission to educational institutions are generally made by a parent, comma, since on that date many a time the student may be a minor, full stop. It is the parent or the guardian who may play fraud claiming false status certificate, full stop. It is therefore necessary that the certificates issued are scrutinized at the earliest and with utmost expedition and promptitude, full stop. For that purpose, comma, it is necessary to streamline the procedure for issuance of social status certificates, comma, their scrutiny and their approval, comma, which may be the following. ये पैरा 13 के नीचे ये है, ये कोट कर दीजिएगा ये सब बैठ के. 15 पॉइंट्स दिए हुए सब कोट कर दीजिएगा, कॉपी कर दीजिएगा. नेक्स्ट पैरा. Reliance is also placed on the judgment of a coordinate bench of this court dated 21/2/2012, passed in Mohan Kumar Bangade versus State of MP and others. WP number आ गया क्या? WP number 3060/2010, wherein in para 10, full stop. Next para. Shri Ravi R.S. Jaiswal, learned senior advocate, assisted by Shri K.K. Gautam, in his turn submits that circular of the board is on record, which clear as annexure R2, which clearly provides that